Good morning, students. Let's start now. Very quickly, we were doing genetically modified organisms yesterday. The full form of GM and GMOs and all that was already done with you children. Let's move on to this. This is something easy. We can proceed easily, quickly. Look here. I had done this part with you. See this. Dependence on chemical pesticides has reduced. That means we've got pest-resistant crops. Third one was it helped to reduce the post-harvest losses. I had discussed with you. Do you remember those big containers we had discussed when we were discussing post-harvest losses? What were they called? Yes. Silos. Silos. Next is efficiency of mineral usage increases in plants, preventing the early exhaustion of fertility of soil. Can anybody explain the sentence to me? Efficiency of mineral usage increased in plants. मैम की मतलब मिनरल्स जो भी सॉइल में है वो मतलब एक डिजायर्ड क्वांटिटी में यूज करेंगे मतलब अच्छे से. बेटा बेसिकली ही इज राइट व्हाट इज ट्राइंग टू से. मतलब इसको ऐसे समझो. नॉर्मली प्लांट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू यूज ऑल दी मिनरल्स जो वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो डबल लॉस होता है. डबल लॉस कैसे होता है? सॉइल तो डिप्लीट हो रहा है and the plant is also not able to use those minerals entirely. पूरी तरह use नहीं कर पाते हैं because the plants are not very efficient. Now we have GMOs, genetically modified plants. Their capacity to use minerals is higher बेटा. मतलब वो जितना minerals लेंगे उसको उतना का उतना को use कर सकते हैं. So wastage नहीं हो रहा है. That means fertility of the soil will also be maintained for a long time. क्योंकि जितना desired है वो उतना ही ले रहे हैं and they are able to use all the material which they are taking. So the efficiency of using minerals is now increased. Let's move on to this one. Enhanced nutritional value of food, example vitamin A, enriched rice. Have you heard about gold rice? Golden rice? You go to Big Bazaar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you go to Big Bazaar rice section में जाओ वहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स पड़े रहते हैं. Golden rice लिखा रहता है. So golden rice is a modified form of rice जिसको artificially हमने rich बनाया है in vitamin A. Remember this. Okay. So golden rice basically is a nutrition rich rice. Which vitamin is added to this? Vitamin A. Vitamin. So remember about this. Other than the above mentioned uses, the genetic modifications have been used to create tailor-made plants. What do you mean by tailor-made plants? जो टेलर बनाता है वो वाले plants? Yes, ma'am. टेलर-मेड plants मतलब जो टेलर plants बनाता है वही होते हैं ना बेटा टेलर-मेड plants? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन से वाले टेलर बनाते हैं बरेली में? मैम वो शामत गल. बेदी टेलर्स. मैम ये नहीं पता. कौन है फेमस प्लांट्स बनाने वाला टेलर बरेली में? आई शुड आल्सो नो. आई विल आल्सो गो एंड गेट सम प्लांट्स मेड. वो कपड़ों पे बनाता है प्लांट. अच्छा कपड़ों पे प्लांट्स बनाता है. ओके पेंटिंग करता है इसका मैम फूल मतलब. पत्तियां बनाते हैं ना मैम कपड़ों पे. अच्छा ओके तो वो वाले प्लांट्स बनाते हैं. पेंटर भी है. 3 of your alumni have cleared the JEE mains और आप लोग टेलर मेड. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. कपड़ों पे पत्ते और फूल बना बना के ऐसे ही नीट निकालोगे मेरे बच्चों? नो मैम. नो मैम. ठीक है. टेलर मेड प्लांट्स आई एम श्योर यू ऑल नो. मैं भी मजाक कर रही हूँ आप भी कर रहे हो. आई अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स बी सीरियस. टेल मी चिल्ड्रन व्हाट आर टेलर मेड प्लांट्स? मैम नहीं पता मैम मुझे बता दीजिए. डोंट टेल मी कि नहीं पता. इतनी बुरी इंग्लिश तो नहीं है सबकी. व्हाट आर टेलर मेड प्लांट्स? मैम मुझे सच्ची में नहीं पता. मैम which are made for our own benefit. आवर ओन बेनिफिट. क्या बात है. और कोई? मैम नहीं पता बता दीजिए. I think आई कांट बिलीव दिस कि आपको टेलर मेड प्लांट्स नहीं पता. हाइब्रिड प्लांट. मैम आयुष टॉपर है. बेटा माय चाइल्ड टेलर मेड इज एन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है एज पर रिक्वायरमेंट. व्हेन यू गो टू अ टेलर वो एग्जैक्टली आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ड्रेसेस बना देता है.
इतना सारा variety he gives you, and he will do exactly what you want, your style. So tailor made मतलब होता है according to individual requirement. So we can make a variety of plants according to our requirement, tailor made plants. If I want a plant जिसके fruits बहुत मीठे हों, that is my tailor made plant. If you want a plant which is disease resistant, then you will go for that kind of a plant. If somebody else wants a plant who is pest resistant, then they will go for that. So tailor made plants basically means the plants which are designed according to the requirement, individual requirement. So we are making what? With the help of biotechnology, we are making tailor made plants. How can we make tailor made plants with biotechnology? मैम हम अपने हिसाब से जो हमें चाहिए और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल सकते हैं, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से उस प्लांट में। वेरी गुड। क्या नाम दिया था जीन को कल ऐसे वाली को इसी चैप्टर में? ट्रांसजीन। वेरी गुड। तो जो नया टेलर मेड प्लांट आएगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक। Known as a transgenic plant. Oh good, I am happy with the excitement. Okay, look at this. To create tailor-made plants to supply alternative resources to the industries in the form of starch, fuels, and pharmaceuticals. So mainly we are making transformants in the form of starch, fuels, and pharmaceuticals. What are pharmaceuticals? मैम याद था, भूल गया। Don't tell me pharmaceutical नहीं पता, सबको पता है। फार्मा इंडस्ट्री कौन सी होती है? फार्मिस्ट, दवाइयों वाली। मेडिसिन दवाइयों। You know pharmacists and pharmacies. Now we are moving on to something important बेटा, and इसको साथ साथ ही learn करना है ताकि आपको घर पे अलग से time ना देना पड़े. It's a rote learning chapter, तो यहीं पे रख लो मेरे साथ. Biopesticides. An application of biotechnology in agriculture is production of pest-resistant plants, which could decrease the amount of pesticides being used. Means we are going to make plants automatically जो pest-resistant हैं, so we will not use pesticides. Bee toxin, please remember this. Bt toxin, remember this word, I'll ask you now. Bt toxin is produced from a bacterium which is called Bacillus thuringiensis. चलिए मेरे साथ याद करेंगे. Bt toxin is produced from a bacterium. The name of the bacterium is, tell me. Bacterium thuringiensis. Spelling देख लो सब लोग. THURIN, thurin. I will hide it and then I'll ask you. G-E, thuringiensis. Tell me now. Bt toxin is produced from the bacterium. Name the bacterium. Bacillus thuringiensis. वही चीज करी जो हमने पहले करी थी. हमने Bt toxin वाली जीन ले ली, फिर इसकी cloning from the bacteria, and then we expressed it to provide resistance to the insects. Okay, so that insect resistance automatically आ गया. And so it is named as a biopesticide. Why do we call it as a biopesticide? Because it becomes resistant to insects. Let's have some examples. Bt corn, rice, tomato, potatoes, soyabean, all these Bt varieties. मतलब इनमें क्या खास बात है बेटा? ये जितनी भी Bt varieties हैं, Bt corn, Bt rice, what is special about these varieties? मैम ये pest resistant हैं. Very good. They are pest resistant. Too good बेटा. तो हमने ये Bt toxin वाला ये produce करा हमने, and we made these new varieties which are resistant to pest. Very quickly, Bt toxin is produced from the bacterium. Bacillus thuringiensis. Yes. Bacillus thuringiensis. Speak out. Bacillus thuringiensis. No, don't be hesitant. ये रटने का चैप्टर है. घर पे बोर हो जाओगे, नहीं रट पाओगे इसे. So it is better कि यहीं पे रट लो. बोल बोल के साथ साथ रटो. इस पे बेटा ये क्वेश्चन हमेशा आता है Bt cotton. So do this very nicely. Like we have Bt corn, we've got Bt cotton also. Bt cotton is created by using some strains of the same bacteria. हमने अभी पढ़ ही लिया था. Bt toxin we get from which bacteria? Bacillus thuringiensis. So this Bt is the short form of Bacillus thuringiensis. The capital B comes from? Bacillus. The small t comes from? Thuringiensis. So Bt is the short form of? Bacillus thuringiensis. Okay, very good. Now, मैम मुंह में प्रॉब्लम हो रही है.
किसमें प्रॉब्लम हो रही है? मैम जीभ में है, बहुत देर बोल दिया ये वर्ड। बेटा तभी याद होएगा. This bacteria produces a protein that kills the certain insects. How does it become insect resistant, beta? Because the protein is produced and this protein is going to kill the insects. And it is going to produce lepidopterans. What are these? What are lepidopterans? मैम प्रोटीन. Beta, read the sentence. I'm giving you 1 minute. एक बार sentence खुद पढ़ो. पढ़ लो पहले, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं. मैम ये लेपिडोप्टेरन्स कोई ऑर्गेनिज्म है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ. सेंटेंस पढ़ो और बताओ कि लेपिडोप्टेरन्स क्या होते हैं. मैम इंसेक्ट्स मैम इंसेक्ट्स होते हैं. कैसे होते हैं? कितने बड़े बड़े होते हैं? कौन से होते हैं? मैम बटरफ्लाईज वाला. Yes. Have you heard about the Lepidoptera? बेटा ये एक ऑर्डर होता है इंसेक्ट्स का. अगर आपको याद हो, क्लासिफिकेशन में कभी याद रहा हो तो इंसेक्ट्स का एक ऑर्डर होता है लेपिडोटेरा. ओके, बटरफ्लाईज एंड मॉथ्स. Tell me what are the two things which are included in Lepidoptera? Butterflies Butterflies and Moths. Moth. So remember, they are basically Lepidoptera is an order of insects only. We have butterflies and moths in this. Now read this sentence. This produces a protein which will kill certain insects and lepidopterans. It's going to kill the lepidopterans also, tobacco budworms, and then we've got coleopterans. Beetles is what you commonly call them. Dipterans, that are flies and mosquitoes. Okay, tell me one example of a lepidopteran. It's given on the page on the board. This tobacco screen. budworm. Tobacco budworm. Tobacco budworm. Give me an example of a lepidopteran. Tobacco budworm. Give me an example of a coleopteran. Beetles. And give me an example of dipterans. Mosquitoes. Flies and मतलब mosquitoes. yes, मतलब ये तीन तरह के इंसेक्ट्स से आपको प्रोटेक्ट करता है. So if you write in the exam that it gives you resistance to insects, you don't deserve full marks. But if you specify that which order of insects is the plant safe for, then it is better. We have discussed 3 orders right now. Name the orders. First was lepidopterans. Second is Coleopterans. And the third is Coleopterans and Diapterans. dipterans. Dipterans, right? Dipterans. Now very quickly, BT is the short form of ऐसे नर्सरी के Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. I'm teaching you like I teach nursery KG children पढ़ा रहे हो, but the main purpose is बेटा again बार-बार कह रही हूँ रटने का चैप्टर है, घर पे बहुत बोरिंग लगेगा, पढ़ लो रट लो मेरे साथ. So Bacillus thuringiensis is insect resistant. Name the 3 orders of insects to which it is resistant. Lepidopterans, Coleopterans and Dipterans. So when you like lepidopterans, give an example in the bracket. One example only you need to learn. Tobacco budworm. What about coleopterans? Beetles. What about the dipterans? Mosquitoes and flies. Too good, beta. Now let me hide this. Chalo, I am hiding this. Chalo, आप बताओ मुझे. चलिए बताओ. मैम क्या? BT is full form of what? Bacillus thuringiensis. It is resistant. We have created plants which are resistant to insects. Very quickly tell me the 3 categories, the 3 orders of insects. Lepidopterans, Coleopterans, Dipterans, and Dipterans. Very good. Give me one example of Noting each. so much. Tobacco, lepidopterans. Tobacco budworm. Flies. Beetles. Okay. अब मैं कुछ और पढ़ाती हूँ ताकि थोड़ी देर तक भूल जाओ जो आपने याद किया है. Because रटने से यही होता है, भूलते ही हैं. But anyways, रटना ही है. So फिर उसके बाद I'll ask you again. ठीक है? अभी तो I'll ask. स्क्रीन पे क्या आ रहा है मैम?
Yes, ये ma'am. मुझे हटाना, आई एम नॉट एबल टू रिमूव दिस, दो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, बट मुझे हो नहीं रहा है। मुझे पता नहीं क्या लिखा है, प्लीज मूव द विंडो, क्या लिखा है ये, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेड एप्लीकेशन। व्हाट डज इट मीन? आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू यूज द लैपटॉप वेरी एफिशिएंटली, बट आई एम ट्राइंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिसन टू द सेकंड पैराग्राफ नाउ। Bacillus thuringiensis forms a protein crystal. We already know Bacillus thuringiensis is a strain of bacteria. ठीक है बेटा? This will form a protein crystal जिसको हम बोलते हैं cry. What is it called? Cry. C capital, R and Y small. Listen again. Bacillus thuringiensis, it will form a protein crystal. The name of the protein crystal is cry. When it is growing beta, एक particular phase of growth में, this Bacillus thuringiensis, it will form a crystal. What is the name of the crystal? Cry. Yes. Cry. It is this crystal which will contain an insecticidal protein. Insecticidal protein means a toxic protein which is toxic for insects. Okay, it will produce which kind of a protein? Insecticidal protein. But beta इसमें एक special बात होती है. This toxin will not kill the bacillus itself. Bacterium, it will not kill the bacterium. Reason, because the Bt toxin protein exists as inactive prototoxins, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into the active form. देखो यहाँ पे थोड़ा सा complicating है, but इसको ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा. Bacillus thuringiensis was producing a crystal. नाम क्या था protein crystal का? Cry. Cry. At a certain stage of growth, when it was growing, उसने एक crystal produce किया. And this crystal, that means this protein, is toxic for whom? Insects. Insects. It is toxic for insects. इसलिए हम इसे बोलते हैं, इसीलिए we call it as insecticidal protein. Because it is toxic for insects, so we call it as insecticidal protein. अब बेटा दो चीजों को समझो, toxin and prototoxin. Toxin means something which is poisonous, and prototoxin means अभी poisonous नहीं है लेकिन बाद में जाके poisonous हो जाएगा. Prototoxin. Understand the difference between these two words. Toxin means abhi if you consume it or anybody takes it, it is poisonous. But prototoxin abhi inactive phase में है तो toxic. But inactive phase में है, it is not showing its toxicity. Later it will become toxic. Later it will become inactive. Abhi वो prototoxin means inactive stage of toxin. Everybody understood the word prototoxin? Yes, ma'am. Inactive stage of toxin. अब देखो बच्चे क्या होता है. This crystal is containing that toxic protein which we call as insecticidal protein. But ये जो protein है, this will not kill the bacterium. Bacterium के अंदर present है ये, but this is not killing the bacterium. Why it is not killing the bacterium? Because ये जो toxin है आपका Bt toxin, this exists in prototoxin form in the bacterium. Bacteria के अंदर present तो है, but is it in inactive stage? Inactive stage में what do we call it as? We call it as prototoxin. So in the bacterium, it is present as prototoxin, so it will not harm the bacteria. But जैसे ही once an insect ingests the inactive toxin, as soon as this inactive toxin goes into the body of an insect, वो active हो जाता है. क्यों active हो जाता है? Let us understand this. This protein needs alkaline pH to become active. ये जो हमारा protein crystals बने थे, cry वाला, they need an alkaline pH. Okay? So that this can make the crystal soluble. This protein was formed in the form of crystals, I told you. And these crystals become soluble only in which medium? Alkaline medium. ये alkaline medium उसको bacteria में तो मिला नहीं. So this protein remains in inactive state. As soon as an insect ingests it, अब insects का जो gut है बेटा, there the medium is alkaline. So जैसे ही this protein will reach the gut of the insects, it will become active. Why it becomes active? Because this alkaline medium ये crystals को soluble बना देगा, यानी अब ये dissolve होने लगेंगे. This toxic material will start dissolving in the body of the organism. 50% समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें क्या है? It is very simple. Let's do it again. Bacillus thuringiensis produces a protein crystal, not protein, my children. It is protein crystal. What is the name of the protein crystal? Cry. Cry. Cry comes from the word crystal, ताकि आपको याद रहे. अगर आप crystal की spelling देखो तो first three letters CRY होते हैं.
So that is why we have given this name crystal ka CRY. So this protein is existing in the form of crystals, that is cry. This will produce what? This is going to produce an insecticidal protein. But this insecticidal protein is not going to harm the bacteria in which it is present. Reason क्या था बेटा? मैम alkaline For pH नहीं मिला. मैम वो inactive alkaline protein. medium नहीं था. वेरी गुड. ये जो क्रिस्टल्स हैं ये तभी सॉल्युबल होते हैं अगर मीडियम कौन सा मिलता है? Alkaline. 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 अदरवाइज ये इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल है तो किसी भी चीज पे इफेक्ट ही नहीं करेंगे, वो साइड में जहां भी है वहां पड़े रहेंगे. Now as soon as an insect ingests these, now these crystals will enter the gut of the insect. What is the medium in the gut of the insects? Alkaline. 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 तो आपका ये जो crystals है, they are soluble in alkaline medium, वहां ये dissolve कर जाएंगे and the toxic material will mix into the individual's body and the insect will die. This is how these protein crystals are toxic to insects, but they are not toxic to the bacteria. Very important question which comes from this paragraph is this only, beta, that this toxin does not harm the bacteria. It does not harm the bacillus from which it is extracted. Okay. What was the bacillus? बताओ क्या नाम था उसका? BT cotton strains of Bacillus bacteria. thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Bacillus. It will not harm this strain of bacteria. Why? Tell me very quickly. मैम क्योंकि उसमें मैम alkaline क्योंकि इसमें medium नहीं alkaline मिलेगा. medium नहीं होता. अच्छा, तो ये जो टॉक्सिन है ये किस फॉर्म में रहता है? एक वर्ड बताया था मैंने आपको, बैक्टीरिया में किस फॉर्म में? Prototoxin. प्रोटोटॉक्सिन. दैट मींस द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन. प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में रहेगा. And as soon as it enters the insects, so what happens to this cry? मैम ये बदल टॉक्सिन में बदल जाएगा एक्टिव स्टेट में क्योंकि अल्कलाइन पीएच में जाएगा. Excellent beta. Prototoxin जो है, this will convert into what? This will convert into toxin. That means जो inactive state से वो active state में आ जाएगा because उसको कौन सा medium मिल गया? Alkaline. Alkaline medium. This paragraph is clear to everybody. ये BT cotton वाला, इसमें ये Yes, वाला ma'am. question. Yes, This ma'am. question is very important. Let me ask some questions quickly. Name the protein which is produced by Bacillus thuringiensis. Insecticidal Cry. protein. Insecticidal protein, we call it as cry. It is not harmful for dash. Not harmful for? Bacteria. Bacillus. 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 Very good. But it is harmful for? Insects. Insects. In the body of Bacillus, this protein exists in the form of? Prototoxin. Prototoxin. Means inactive. Very good. And as soon as it enters the insect's body, the prototoxin converts to? Inactive form. Toxin. This protein crystal needs dash medium to become Alkaline. active. Alkaline medium. Oh yes, Saransh, alkaline medium. And where will it get this alkaline medium? The gut of the insect. Gut of insect. बेटा इसको समझ के चलो. This chapter is very boring when it comes to learning. इसलिए इसको समझ लो बार बार. I'm training you like class 1 children, but क्या करें? We have to do this. चलिए आगे चलते हैं. Let's do this. The activated toxin. Now your toxin has become active or it is still inactive? Active. Now it becomes active. After it has entered the insect, so active हो गया बेटा. Now this active toxin will bind to the surface of the mid-gut. We generally said कि जैसे ही वो gut में enter करेगा, it will get an alkaline medium, वो active हो जाएगा. So by the time it reaches the middle part of the gut of the insect बेटा, ये पूरी तरह से active form में हो जाएगा, and it creates pores. Okay, it will create pores in the gut, and this will cause the cell swelling and lysis, leading to the death of the insect. ठीक है, अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं. Your prototoxin is already converted into toxin as soon as it entered the gut of the insect. अब after entering the gut, उसको कौन सा medium मिल गया? Alkaline. Alkaline medium. तो अब वो normally prototoxin is converted to toxin, and जब वो bind कर जाएगा, अब वो active हो गया, तो तब तक active होने के बाद वो midgut तक पहुंच गया. There it will bind to the epithelial cells of the midgut, and then it will do two things to the epithelial cells. या तो वो pores कर देगा बेटा, holes कर देगा,
या फिर वो सेल की लाइसिस कर देगा. व्हाट इज लाइसिस? अरे मैम वो जो सेल डिजेनरेट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के टूटने के कारण. एग्जैक्टली, लाइसिस, ब्रेकिंग डाउन. लाइसिस वर्ड मीन्स ब्रेकिंग डाउन. अब एपिथेलियल मेम्ब्रेन को इसने अटैक कर दिया एपिथेलियल सेल्स को, तो सेल ब्रेक कर जाएंगे, दैट इज लाइसिस. So whether it is the lysis of the cell or it is making pores in the epithelium cells, basically both of them will cause the death of the insect. So आपको पता चला how this protein crystal causes the death of the insect? बैक्टीरिया के अंदर Yes, तो ma'am. प्रोटोटॉक्सिन फॉर्म में था, फिर बैक्टीरिया से when it entered the insects, it got an alkaline medium, तो वो active form में आ गया. Then it binded itself to which part of the gut, children? Middle. Yes, Surface. the midgut. Midgut, very good. It's binding to the epithelial cells of the midgut. And what are the two things which does? Either it lyses, it does the lysis of the cells, or what is the second thing it is doing? Create pores. Yes, it creates pores. And because of this, the insect will die. BT tobacco was first cultured to kill hornworms. देखो बेटा, बीटी कॉटन तो क्लियर हो गया. बीटी कॉटन में और कुछ पढ़ने को है नहीं. Let's come to the next one. BT tobacco. BT tobacco. Clear everybody? It's the second kind of BT that we are doing, tobacco. This is also insect resistant. It was cultured to kill hornworms. इसको specially बनाया गया था against some special worms. What is the name of the worms? Hornworm. Hornworms. ठीक है, उनके वो हेड के आगे वो छोटे छोटे ऐसे पॉइंटर्स निकलते रहते हैं जो हॉर्न्स की तरह लगते हैं. दैट इज व्हाई हम उन वर्म्स को क्या बोलते हैं? हॉर्नवर्म्स, कॉमन लैंग्वेज में. एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्नवर्म्स इज मंडूका सेक्स्टा. मंडूका, MANDUCA, मंडूका सेक्स्टा, SEXTA, मंडूका सेक्स्टा. Tell me the scientific name of hornworms. Manduca Manduca sexta. sexta. मंडूका की स्पेलिंग बोलिए. MANDUCA. MUNDUCA. Okay, MUNDUCA. And sexta? SEXTA. SEXTA. Yes, sex वाला SEX and TA, sexta. These hornworms or Manduca sextas generally used to attack which plant? BT कौन से प्लांट Tobacco. को डिस्ट्रॉय करते थे? Tobacco plant. only. BT. Yes, yes, tobacco. BT तो रेजिस्टेंट हो जाएगा ना. जनरली ये प्लांट को स्पॉइल कर देते थे. टोबैको प्लांट का मैक्सिमम लॉस जो होता था वो इसी इंसेक्ट के कारण होता था. हॉर्नवर्म्स, जल्दी से नाम बताओ, साइंटिफिक नेम. Manduca sexta. Manduca Manduca sexta. sexta. So we wanted to save our tobacco from these worms, hornworms or Manduca why? sexta. बेटा वो टोबैको की पूरी फसल को स्पॉइल कर देते थे, तो इनसे बचाएंगे नहीं. अच्छी बात है. अच्छी बात है. क्या अच्छी बात है इसमें? ऐसा थोड़ी है कि टोबैको वही वाला होता है जो रिक्शे वाले. टोबैको वही थोड़ी होता है जो रिक्शे वाले हाथ में ऐसे मलमल के खाते हैं. टोबैको के और भी यूजेस होते हैं. For you, the general concept of tobacco is that people go. Yes, ma'am. See, this is my perception. I have just seen the usage of tobacco there only. I've seen on rickshaw Yes, stands and ma'am. auto stands को hand पे पता नहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं वो. I asked somebody what tobacco. Yes, ma'am. So that is the only perception of tobacco in India that we have, beta. But other countries में लोग कभी कभी कुछ positive भी सोचते हैं, हमारी तरह ही नहीं सोचते हमेशा. So there are other things where we can use tobacco for medicine as well. ओके, आपने Tobacco as a medicine. यस बेटा, जो नींद वींद की गोलियां होती हैं, मेंटल Yes, ma'am. स्ट्रेस Yes, की, ma'am. नींद में जो टैबलेट्स दी मैम जाती वैसे है नींद की गोलियां भी बुरी होती है. बेटा, लेकिन डॉक्टर समटाइम्स दे गिव ना. Yes, ma'am. डिप्रेशन Yes, वाले ma'am. पेशेंट्स को चाहिए होती हैं. कई बार जिन लोगों को बहुत एक्सट्रीम पेन होता है बॉडी में, उनको रिलीफ देने के लिए दी जाती हैं सच काइंड ऑफ सेडेटिव्स. वी नॉर्मली कॉल देम एज सेडेटिव्स. सो एक माइनर डोज Yes, सेडेटिव्स में और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, बट कुछ पार्ट हम लोग इसका भी ऐड करते हैं. सो अच्छी बात तो है. तो फिर सारे हॉर्नवर्म्स पूरे देश से ला के छोड़ दो उसी फील्ड में. मंडूका सारे Yes, खत्म कर ma'am. देंगे. द टॉक्सिन इज encoded by the cryogenes which are insect group specific. अब बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल है. You have to learn with me. Insect group specific. Okay. Insect group specific means what? मैम ये क्या हो रहा है?
वो बेटा स्क्रीन से चला गया है, 2 मिनट मुझे दो, मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ, तब तक आप बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्ट स्पेसिफिक? मैम कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स पे एक्ट करें। सिर्फ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स पे ही एक्ट करते हैं, हर जीन हर इंसेक्ट पे अटैक नहीं करेगी। चलिए अब लर्न करते हैं कौन सी चीज किस पे करेगी। लर्न इट विद मी। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं कॉटन बॉल वॉर्म्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच वॉर्म्स? कॉटन। Cotton ball. Cotton. Cotton bollworms. On cotton bollworms, there are two genes which will act, two cry genes. Cry IAC, cry, बेटा cry अब आप कैसे याद करोगे इसके? Cry 1AC, cry 2AB. बोलो जल्दी cotton balls के लिए। Yes, ma'am. Cry Cry 1 1 AC AC, and cry cry 2 2 AB. AB. इसका एक तरीका बताती हूँ। Cry 1 लिख लेना और cry 2 लिख लेना, ठीक है? फर्स्ट वाला cry 1, दूसरे वाला cry 2, दोनों में AA लिख लेना। क्लियर? तो क्राई 1 है इधर हो गया, क्राई 2 है उधर हो गया। अब ये किसके ऊपर एक्ट करता है? लिसन केयरफुली। व्हाट हैपेंस सारांश? नाउ दिस इज एक्टिंग ऑन व्हिच वॉर्म्स? पार्डन? No. व्हाट हैपेंस सारांश? यू वांट टू से समथिंग? No, ma'am. ओके, लिसन, हाउ आर यू गोइंग टू लर्न दिस चिल्ड्रन? आई एम हेल्पिंग यू, फिर एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट राइट क्राई 1 क्राई 2, देन दोनों के साथ AA लिख लो। And because this is used for cotton bollworms, so cotton का first letter क्या है? C. तो first वाले A के साथ C लगा दो, and bollworm में first letter is B, तो second वाले के साथ B लगा दो. So cry 1 AC and cry 2 AB are used for controlling which worms? Ball Cotton worms. ball Cotton ball worms. worms. Cotton bollworms. बहुत easy है। AC, C से हमें याद रहेगा cotton, and AB, B से याद रहेगा bollworms. So very quickly, cry 1 AC and cry 2 AB, they used to control which worms? Cotton ball worms. Cotton ball worms. Let's go on to the next one now. Cry 1 AB. यहाँ पे C तो नहीं है। अगर C होता, then we would have got AC होता तो we would have got cotton bollworms. Cry 1 AB is corn borer. Name the insect. Corn borer. borer. Cry 3 AB. It controls potato beetles. Cry 3 AB will control potato beetles, and Cry 3 BB will control rot worms, corn rot worms. ये corn को rot कर देते हैं, सड़ा देते हैं, सड़ जाता है corn पूरा. If this worm attacks, I'm giving you 1 minute. फटाफट learn करो, फिर मैं इसको hide करूंगी and then I'll see कि सबसे जल्दी कौन answer देगा. Cry 1 AC and Cry 2 AB for cotton bollworms. Cry 1 AB corn borer. Cry 3 AB potato beetles. Cry 3 BB corn worms. चलिए 1 minute, your time starts now. Start revising, I'll ask you. Done, beta? Done or not yet? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let me hide this. Okay, done. Let's start now. I'll name the genes, you name the worms. Ready, everyone? Speak out, yes or no? Yes, ma'am. Cry 3 BB. Corn rotworm. Rotworm. Rodworm. It is corn rotworm, means it attacks on corn. वो भी याद रखिए, corn rotworm. Next, Cry 1 AB. Corn borer. Corn borer. Corn borer. Cry 3 AB. Potato beetle. Potato beetle. Very good, very good. बहुत बढ़िया. Cry 1 AC and 2 AB. Cotton ball worms. Cotton ball worms. Ball worm. Cotton ball worms. So what are we trying to, this question may come, that's justify the statement that the cry genes are insect specific.
cry genes are insect specific, then you will give these examples. चलिए अब उल्टा करते हैं. Let me see, थोड़ा difficult वाला. कॉर्न बोरर की cry gene बताइए. मैम क्राई बने भी Cry one AB. Cry Very bunny. good. कॉर्न रॉटवर्म. मैम क्राई 3BB Cry Try 3BB. 3AB. Good. Then potato beetles. क्राई 3 Cry Corn three. 1 Cry AC. 3AB. And what about cotton bollworms? Cry one Cry AB. bunny. Cry bunny. AC Cry and cry 2AB. 2AB. So good. So you have learned it. Again, I'm saying अकेले में बैठोगे रटने तो book रख दोगे कि क्या पागलपन है. We are not able to do this. That's why I'm saying if you'll study together, you'll be able to learn this chapter. Now let's move on to the next topic, that is pest resistant plants. अभी तक हमने कौन से plants create करे बेटा? किस चीज से resistance थे? मैम Insect. इंसेक्ट Insect resistant. मैम ये कल कर Insect लेंगे. resistant. क्या हो गया? इतना ही याद करना मुश्किल हो गया? चलो ठीक है. Yes, let me ma'am. ask. मैम बहुत बोरिंग हो गया. सिर्फ कितना पढ़ा? सिर्फ बीटी कॉटन पढ़ा, बस और कुछ भी नहीं पढ़ा. यस मैम IIT JEE का रिजल्ट मेंस हैज कम आउट. 3 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल हैव क्वालिफाइड, जिनके बारे में पता चल गया. रुद्रांश, रोहित राज कोहली एंड श्यामल कृष्णन. बाकी आई डोंट नो. 3 स्टूडेंट्स तो आई गॉट अ मैसेज. बाकियों का आई डोंट नो. 3 have already qualified. Do you know of someone else? No, ma'am. No? नो मैम Okay. No, nobody knows. चलो इतना सा तो कर लेते हैं. Pest resistant plants. Let's do this little part which is left. इतना सही तो है. Several nematodes infect a wide variety of plants, including human beings. जल्दी से इसका नाम याद करते हैं. ये बहुत important है. This is a nematode. Its name is Melodigine incognita. Incognita बोलो नहीं तो spelling गलत करोगे. चलिए, let's learn the name of this nematode. Melodigine incognita. Speak out the name of the nematode. मिलोए Malloy डिकाइन Melodigine incognita. incognita. हाँ बेटा मेलो मत बोलो. इट इज मेलोए. नहीं तो आई लिखना भूल जाएंगे आप. मेलोए डिगाइने इनकॉग्निटा. This also infects the roots of the tobacco plant. So it reduces the production of tobacco. So name the nematode which attacks the roots of the tobacco plant. मिलोए डिकाइन Melodigine इनकॉग्निटा. incognita. Incognita. Melodigine incognita. Very good. बहुत बढ़िया. Now let me hide this spelling for you people. चलिए आप बताइए Melodigine की spelling. MELOIDEGYNE. एक एक करके. Okay, one by one. Abhirup again. मैं भूल गया. Okay, who would like to try Melodigine? बोलो. MELOIDY. M क्या? M क्या? MELOIDEGYNE. Melodigine incognita. Okay, hornworm का नाम क्या था? I made you learn the name of hornworms. Munduka sexta. मंडूका Manduca सेक्स्टा. sexta. Manduca sexta. Very good. BT is a short form of. Bacillus Bacillus thuringiensis. thuringiensis. Okay, 3 orders we did with you today. मैम Lepidopterans, Coleopterans and Dipterans. Dipterans. Okay. So give me the example of any one lepidopteran. मैम tobacco budworm. Coleopteran. Coleopteran. Beetles. Very good. Beetles. And the last one, dipterans. Flies and मैम mosquitoes. mosquitoes. Flies and अच्छा. Corn borer की cry gene. Name the cry gene for corn borer. Then cry one AB. मैम cry 1AB. Corn rotworm. मैम cry 3BB. बहुत बढ़िया. Very good. Colorado potato beetles. मैम Cry cry 3AB. 3AB. Very good. Name the nematode which attacks the roots of tobacco plants. मिलोए डिकाइन इनकॉग्निटा. Melodigine incognita. That means you've learned all the difficult things today. Flies and mosquitoes belong to which order of insects? मैम Dipterans. क्या?